Rajesh. So coach, what went wrong in the game? I think if you analyse the game, it's probably the two power plays. Our power play with the ball went for the best part of 80 runs, and we were only able to manage mid-40s or early 40s. So I think that's on the scoreboard, the big difference. And we were also sloppy in the field compared to Rajasthan, who were outstanding. So that would be the two immediate takeaways from the game. Coach, since 2019, you haven't chased 180 plus. No. So has that been a problem? So how are you going to address this with this kind of batting lineup you have right now? We just got to keep working hard. I did see that stat. We won a final that was revised, which was close, but apart from that, it has been a little bit slim pickings. But it's each year is different, and this group we are learning. It is quite a different group to what we've had in the past. So we're learning about the combinations of the team, and then getting to know the players as well, what they can and can't do. So it's the start of a 3-year cycle is always a little bit difficult, especially if you're just short of a little bit of form. And we are pushing hard to try and find that form, but we're making mistakes doing it. Not far away. Just as much as I pointed out, the first 6 overs where we bowled weren't great. I thought the next 14 were outstanding. You can see the potential that's there, and a little bit better with the bat, but still some work to go, no doubt about it. Coach, your thoughts on Dhoni on the spin? Yeah, he got some good wickets. On another day, it might have been an opportunity for us. I think Parag's catch was the turning point in the match. The Dubé matchup was going our way, but he had courage, Mr. Ring. You can't deny that, and he certainly gave the ball air. Sometimes you give the ball air in this competition, you can go the distance, but he had the courage to do that. And Gaikwat's wicket as well was very clever. So he held his nerve and had a good day. I can't understand that one. Sorry, man. What is the planning of the match? It was for Nitish. What's the turning point of the match? Is it Ruturaj's wicket Or Nitish Rana's batting? or Nitish Rana's batting? Oh, Nitish Rana played really well. I thought he combated a bit of bounce and a bit of seam early to get them off to a great start. Mentioned to Parag's catch. Dubé is a devastating player to spin, and they were looking to bowl spin, so we thought we were in with a good opportunity to advance the game. So that catch was big, and then classy bowling from Hasaranga to Ruturaj. So probably 3 pretty good moments. Many people want to say that MS Dhoni batted much later. What do you think? What is it? MS Dhoni batted much later. Much later. Yeah. What do you think? Dhoni is coming. Oh, so you asked me why is MS Dhoni Number 9. Now, MS Dhoni is much better coming earlier. Yeah, it's a time thing. MS judges it. His body, his knees aren't what they used to be, and he's moving okay, but there's still an attrition aspect to it. He can't bat 10 overs running full stick, so he will gauge on the day what he can give us. If the game's in the balance like today, he will go a little bit earlier, and he backs other players when other opportunities are up. So he's balancing that. I said it last year, he's too valuable to us, leadership and wicket keeping, to throw him in at 9, 10 overs. He's actually never done that. So look, from around 13, 14 overs, he's looking to go, depending on who's in. Last one. Yeah, coach, with 2 back-to-back losses and now you're going to face DC at home. So do you think there is a mounting pressure on the team and as well as Ruturaj Gaikwad? No, there's pressure full stop right from the ball one. It doesn't change. You look at the nature of the loss. I was a little bit grumpy in the last game, just with probably the way we read the wicket and the way we played. This game, we were in the fight, which is, I'm okay with that. We can get a lot better, and that excites me. But I do get aware that time goes pretty quickly in this competition. So we've won 1 out of 3. It's not all bad. The competition's about that. Everyone's sort of beating each other. A couple of teams are up the top. But the way we respond, the resilience to a loss like this is always very important. And going back home, I just hope we can get a wicket that we can understand and then and play well on with the weapons that we've got. But hey, it's not all bad. We did some good things, but we just need to tidy up a few others. Do you think this wicket played like the shape of cricket, or do you think it was much better than the previous one? I haven't really thought about it, to be honest. Each one that I look at is a mystery to me. You're trying to weigh up whether it's due, how sticky it feels, how much water's been put in it. Is it going to get tougher later on? The trend is usually to bowl first.
but we've seen a couple of pitches play harder. We felt the one in Chipbook was harder the other day, which is unusual. So it's just a case of assessing and sometimes maybe losing the toss. But yeah, it's one of the big parts of the IPL to get it right. So we just got to make sure we can guesstimate it right or get it as close as possible. Thank you. Thank you. Nitish, congrats on your knock. Firstly, how was the wicket and how do you feel after this important innings that has given Rajasthan the first victory of the season? आई थिंक विकेट पिछले गेम से थोड़ा बेटर था और वो पावर प्ले में कैच करना बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज पिछले गेम में हमने यही सीखा था कि जितना नया बॉल अच्छा बैट पे आ रहा है उतना बॉल पुराने होने के बाद नहीं आता है. तो प्लान यही था कि विकेट को जानते हुए कि क्या बेस्ट शॉट्स हो सकते हैं इस विकेट पे खेलने के लिए और वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश थी और होपफुली वो अच्छे से हुआ और वो 2 पॉइंट्स मिले. Sorry, just one more extent. Did you have a target in mind when you were in the middle actually? Because you were looking like getting 200 above actually at one point. सर ऐसे टारगेट कुछ नहीं था बट हाँ अब आप एक फ्लो में बैटिंग नहीं कर सकते. आप फर्स्ट बॉल से लेके आप लास्ट 120वीं बॉल तक एक फ्लो में बैटिंग नहीं कर सकते. बहुत सारे पार्ट्स में गेम चलता है और जब मिडल ओवर्स आते हैं तो थोड़ा स्लो डाउन भी होता है. बट हाँ मैं जब एंड ऑफ द इनिंग में यही सोच रहा था कि शायद हम 10 से 15 रन शॉर्ट हैं. मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था 200 बट इस विकेट पे 180 आई गेस बहुत अच्छा स्कोर था और उसके लिए क्रेडिट जाता है जोफ्रा को जैसा उसने पावर प्ले में बॉल डाला. पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट था. जैसे बैटिंग करते हुए जितना इंपॉर्टेंट था उतना बॉल डालते हुए भी था और क्रेडिट जोफ्रा को जाता है जो उसने पावर प्ले में इतना अच्छा स्टार्ट दिया हमें. Nitish, what was the thought process behind Jofra Archer not completing his quota of overs? Because you had a chance. Jofra Archer 4 ओवर पूरा कंप्लीट नहीं किया. वो अच्छा बॉल कर रहा था. वो चौथा ओवर मतलब जो नहीं कर रहा है. सर जैसा मैंने अभी बोला कि बॉल पावर प्ले के बाद बॉल थोड़ा पुराना होता है उसके बाद बॉल थोड़ा स्पिन होना शुरू होता है थोड़ा रुकना शुरू होता है और 4 ओवर कोटा आई गेस कहीं लिखा नहीं होता. ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा बॉल डाल रहे थे. ऑन द ट्रॉट 4 ओवर डलवाना T20 में बहुत मुश्किल है बिकॉज आप बैक एंड के लिए भी कुछ ना कुछ बचा के रखते हो. बट जब हमने मिडिल ओवर्स में हसरंगा ने जैसा बॉल डाला 3 या 4 आउट किए हसरंगा ने तो हमने वहाँ डिसाइड किया था कि हम स्पिन के साथ ही जाते हैं. कार्तिकेय हम लेके आए थे गेम में. हमें पता था कि उसकी स्किल सेट उसके पास कितना है और होपफुली जैसे तो उसने भी एक ही ओवर डाला. हमने नहीं सोचा था कि वो 1 ओवर डालेगा बट उस सिनेरियोज में गेम चलता है सर. वो उस टाइम पे 2 या 3 सीनियर प्लेयर्स क्या सोचते हैं या कैप्टन कैसे सोचता है वो इंपॉर्टेंट होता है. आई गेस अगले मैच में ज़रूर सर अगर ऐसा मौका हुआ तो 4 ओवर डलवा देंगे जोफ्रा को. पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन पहली जीत के कैप्टन 2 मैच. तो आपको कब पता चला कि आपको खास डाउन में आना है ये मैच के लिए? टीम डिसीजन आपको कब पता चला? सर कल पता लगा था. राहुल सर का कॉल आया था प्रैक्टिस पे जाने से पहले और मैं कल प्रैक्टिस पे नहीं आया था. मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो तब मुझे पता लगा था कि मैं 3 नंबर पे बैटिंग कर रहा हूँ. और आई गेस रियान ने भी मुझे बोला था कि आप 3 नंबर बैटिंग कर सकते हो. तो मैंने उसको मना नहीं किया था. मैंने उसको बोला था जो टीम का डिमांड है जहाँ पर टीम चाहती है मैं वहाँ बैटिंग करने को तैयार हूँ. आई गेस वो डिसीजन बहुत अच्छा था इसलिए बिकॉज मैं भी सेम चीज़ इंटरव्यू में बोल के आया हूँ. पहले 2 मैचेस में जब मैं बैटिंग कर रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा हार्ड मारने को देख रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे हार्ड मारना है. तो आज के मैच में यही मेरे लिए पिछले 2 मैच से मेरी लर्निंग यही थी कि मैं अगर प्लेस करने को देखूंगा इस विकेट पे अगर पेस यूज़ करने को देखूंगा नए बॉल पे पेस कितना मैं यूज़ कर सकता हूँ वो अगर करने को देखूंगा तो सक्सेस रेट मेरा बढ़ सकता है रन बनाने का. तो और आज वही मैंने किया और अच्छा इनिंग एक आया और इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स टीम के लिए मिले. लास्ट क्वेश्चन. आप जो 3 मैच विराट कोहली ने कैप्टनशिप किया है आज भी वो कैप्टनशिप में था तो कैसा लगा उसका कैप्टनशिप और आज आप लोग का फील्डिंग भी बहुत अच्छा है और बरसापरा स्टेडियम के बारे में आप क्या बताएं? आई थिंक कैप्टनसी सर बड़ी रिजल्ट ओरिएंटेड है. अगर आपके रिजल्ट आपके फेवर में आता है तो हर इंसान ये बोलता है कि बहुत अच्छा कैप्टन है. मैं ये नहीं मानता. आई थिंक छोटी छोटी बैटल्स होती है T20 गेम में. आप वो बैटल्स कैसे जीतते हो किस बॉलर के साथ जीतते हो किस बैट्समैन के साथ जीतते हो आई गेस वो इंपॉर्टेंट होता है. वो एक प्लेयर जानता है और बहुत काम है रेहान एज अ कैप्टन और ये ड्रेसिंग रूम भी बहुत काम है. और आई गेस ये स्टार्ट होता है कोचेस से क्योंकि जिस तरीके का एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है संजू ने या इवन राहुल सर ने ड्रेसिंग रूम का उसमें एनवायरनमेंट ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा जीत में खुश नहीं होना बहुत ज़्यादा हार में लो नहीं जाना. हमें एक लेवल मेंटेन करना है ड्रेसिंग रूम का. आई थिंक वो पहले 2 मैच में भी दिखा था. बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हुआ था कोई भी और सिर्फ जो प्रोसेस है उस पर ध्यान देने की कोशिश थी और आज वो प्रोसेस की वजह से ही 2 पॉइंट आए. Thank you. What is the turning point in this game? Your knock or Hasan's score? सर मैं मानता हूँ कि रियान का वो कैच कवर्स पे आई थिंक वो इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था गेम का.